और एक मेरी सुस्ती की वजह से रह गया। तो आज वो कैंपस में है। ये रहा कैंपस और मैं अभी रास्ते में हूँ। घर से 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस कैंपस तक जाने में। ये मेरे घर से भी नज़र आता है। बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है। इसके आसपास भी बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। ये कैंपस है और इसका जो मेन गेट है वो है रोड की साइड, रेल की पटरियों के रोड क्रॉस करके सामने की साइड। आज मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग होंगे नहीं क्योंकि सैटरडे है। तो इन्होंने ये 8 घंटे का सेमिनार आज रख लिया, जो मैं करके फारिग हो जाऊंगी तो फिर मुझे सर्टिफिकेट अलाउ कर देंगे ये लोग इंटर्नशिप के लिए। 6 सेमिनार पे मेरी सिग्नेचर हो चुकी है। ये मेरा कैंपस है, बैक साइड से मैं दिखा रही हूँ। फ्रंट पर इसका डोर है। लोकेशन बहुत हसीन है इसकी। मैं चल कर आई हूँ इस साइड से। 5 मिनट मुश्किल से मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है। ये है जी हमारा यूरोपियन कैंपस, जिसको हम कहते हैं ECRI। अब बजाय इसके घूम के मेन रोड से जाऊँ, मैं यहाँ से शॉर्टकट बना हुआ है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं प्रोफेसर की। लोकेशन बहुत कूल है। दो बिल्डिंग्स एक साथ बनी हुई, पुरानी और नई। देखते हैं कि मेरा क्लास आज कौन सी बिल्डिंग में लोकेटेड है। जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो जो शीशे का बना हुआ है, यहाँ स्टूडेंट्स आके स्मोकिंग या चैटिंग किस तरह करते हैं, बातें वगैरह। ये पुरानी बिल्डिंग है और ये वाला पोर्शन नया बना है। ये स्टूडेंट एरिया है। यहीं पर स्मोकिंग करके ये ट्रैश बना हुआ है बीच में। यहीं ये लोग डंप कर देते हैं उसको क्लासेस ऑफ होने के बाद। आज कोई गाड़ी नहीं खड़ी है पार्किंग एरिया में, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। और मुझे लगता है कि पुरानी बिल्डिंग में हमारी सेमिनार है आज। तो जाके देखती हूँ पहले मैं पुरानी बिल्डिंग में। ये रेल की पटरियाँ बनी हुई सामने। प्रेजेंटेशन टेक्निक 13-16 इसका आपका से रोटल ये है। You're speaking in public, a fate some deem worse than death. See, when you're dead, you feel nothing. At a podium, you feel stage fright. But at some point, we all have to communicate in front of people, so you have to try and overcome it. To start, understand what stage fright is. Humans, social animals that we are wired to worry about reputation. Public speaking can threaten it. Before a speech, you fret. What if people think I'm awful, that I'm an idiot? That fear of being seen as an awful idiot is a threat reaction from a primitive part of your brain that's very hard to control. It's the fight or flight response.
a self-protective process seen in a range of animals, most of which don't give speeches. But we have a wise partner in the study of freaking out. Charles Darwin tested fight or flight at the London Zoo's snake exhibit. He wrote in his diary, "My will and reason were powerless against the imagination of a danger which had never been experienced." He concluded that his response was an ancient reaction unaffected by the nuances of modern civilization. So to your conscious modern mind, it's speech. To the rest of your brain, built up to code with the law of the jungle, when you perceive the possible consequences of blowing a speech, it's time to run for your life or fight to the death. Your hypothalamus, common to all vertebrates, triggers your pituitary gland to secrete the hormone ACTH, making your adrenal glands shoot adrenaline into your blood. Your neck and back tense up, you slouch. Your legs and hands shake as your muscles prepare for attack. You sweat, your blood pressure jumps. Your digestion shuts down to maximize the delivery of nutrients and oxygen to the muscles and vital organs. So you get dry mouth, butterflies. Your pupils dilate. It's hard to read anything up close, like your nose. But long range is easy. That's how stage fright works. How do we fight it? First, perspective. This isn't all in your head. It's a natural, hormonal, full-body reaction by an autonomic nervous system on autopilot. And genetics play a huge role in social anxiety. John Lennon played live thousands of times, each time he vomited beforehand. Some people are just wired to feel more scared performing in public. Since stage fright is natural and inevitable, focus on what you can control. Practice. A lot, starting long before in an environment similar to the real performance. Practicing any task increases your familiarity and reduces anxiety, so when it's time to speak in public, you're confident in yourself and the task at hand. Steve Jobs rehearsed his epic speeches for hundreds of hours, starting weeks in advance. If you know what you're saying, you'll feed off the crowd's energy instead of letting your hypothalamus convince your body it's about to need lunch for a pack of predators. But hey, the vertebrate hypothalamus has had millions of years more practice than you. Just before you go on stage, it's time to fight dirty and trick your brain. Stretch your arms up and breathe deeply. This makes your hypothalamus trigger a relaxation response. Stage fright usually hits hardest right before a presentation, so take that last minute to stretch and breathe. You approach the mic, voice clear, body relaxed. Your well-prepared speech convinces the loud crowd you're a charismatic genius. How? You didn't overcome stage fright. You adapted to it. And to the fact that no matter how civilized you may seem, in part of your brain, you're still a wild animal.